A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. In the last video, we discussed the first chapter of part B of class 11th accountancy, that is a financial statement of sole proprietorship. In this video, we can see that what is the meaning of financial statement of sole proprietorship and which kind of the statement included in the financial statement of sole proprietorship. So first of all, we revise all the topics which are already discussed in the last video, and thereafter we will move to the detailed explanation of the trading account, profit and loss account and balance sheet. So let us start the introductory part of the financial statement of sole proprietorship in a tabulation format. यानी हम इसको पहले एक समरी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे एंड देयर आफ्टर हम हर स्टेटमेंट, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो पोजिशनल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट हो, हर स्टेटमेंट्स को हम डीपली एनालाइज करेंगे कि हाउ वी विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट. Okay, so let's we move it. So let's we move to the very important summary of the financial statement of sole proprietorship. So let's we make a summary of the financial statement of the sole proprietorship. So please note down in your copy and listen carefully. If you are talking about the financial statement of sole proprietorship, it includes the two types of the statement. The first one is a income statement and number second is a positional statement. Okay, with the help of the income statement, organization wants to ability of the profit. It means ability to earn profit. यानी इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से कंपनी क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या पता करता है, अपनी प्रॉफिट की एबिलिटी. And with the help of the positional statement, organization or the sole proprietorship wants to their financial position. अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या पता चलता है, that is financial position. Okay, the next is very important कि सर इनकम स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं. दे आर बेसिकली टू स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करें, सो ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, दैट इज सेल्स एंड cost of goods sold. It means with the help of trading account we establish the relationship between the sales and cost of goods sold. Sales मतलब हमने goods कितने में sell किया and cost of goods sold का मतलब होता है goods हमने कितने में manufacture किया, कितने में बनाया. So with the help of the sales and cost of goods sold, trading account gives the information about the gross profit or gross loss of the business. यानी हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, हम ये पता करते हैं. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट and gross loss with the all indirect expenses. You know very well business में कई तरह के indirect expenses होते हैं जो business के manufacturing activity से related ना होकर non manufacturing activities से related होते हैं.
like a selling expense, like a office and administration expense, like a distribution expense, like a non-monetary expense. तो बिजनेस में कई ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो किसी गुड्स या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट इन एक्सपेंसेस के बिना हम किसी भी गुड्स को इजीली सेल नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस की नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है. उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं. यानी विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट we establish the relationship between gross profit or loss with the all indirect expense, and after the preparation of profit and loss account we calculate the net profit or net loss of the sole proprietorship. If we are talking about the positional statement, so we can say that positional statement depicts the फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. यानी पोजीशनल स्टेटमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है. इट मींस इट गिव्स द रिलेशन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज. इट मींस हमें फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितनी कैपिटल है. ओके और ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट मींस शीट ऑफ बैलेंसेस. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट मींस शीट ऑफ बैलेंसेज which includes the balances of all the types of the assets, all the types of the liabilities and capital. यानी बैलेंस शीट क्या होती है? एक शीट होती है जिसमें हम सारे बैलेंसेस लिखते हैं. किसके किसके बैलेंसेस लिखते हैं? एसेट्स के बैलेंसेस, चाहे वो करंट एसेट्स हो चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो. कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस लिखते हैं, चाहे वो करंट लायबिलिटीज हो चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो. इट मींस बैलेंस शीट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस which includes all the balances of the accounts, whether it is a capital related to the capital, assets or liabilities. Okay, so this is a summary of the financial statement of sole proprietorship. So please note down in your copy. So let's we move to the explanation part of the each and every statement or account which are included in the financial statement of sole proprietorship. The first account, as you know very well, which are included in the income statement of sole proprietorship, that is trading account. यानी सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट होता है दैट इज एन इनकम स्टेटमेंट. उसमें हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? द फर्स्ट अकाउंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय अस, दैट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट. So what is trading account? Please note down in your copy. It is the first step. It is the first stage in the process of final accounts. That is a final statement. यानी ये सबसे पहला अकाउंट होता है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं इन द फाइनल स्टेटमेंट. सो इट इज अ फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंट. This account shows gross profit or gross loss. This account shows gross profit or gross loss incurred by business at the end of अकाउंटिंग ईयर. यानी ये अकाउंट क्या शो करता है? साल के एंड में, यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमारे बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट या कितना ग्रॉस लॉस इनकर्ट किया है. ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसने एंजॉय किया है और ग्रॉस लॉस किया है तो उसने इनकर्ट किया है. बेसिकली दिस अकाउंट, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3,
this account shows the relationship between shows the relationship between sales and cost of goods sold. Cost of goods sold. सो बेसिकली ये जो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये दो आइटम्स के बीच में, दो पर्टिकुलर टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है. फर्स्ट वन इज द सेल्स, सेकंड वन इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो व्हाट इज द सेल्स? सेल्स मींस, सेल्स का यहां मतलब है नेट सेल्स है. सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सो याद रखिएगा, सेल्स का मीनिंग है यहां पर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से. और दूसरा, that is what is the meaning of cost of goods sold? In short way we can say that COGS, cost of goods sold. So what is the formula of cost of goods sold? That is opening stock plus net purchase plus direct expense. So ये जो arrows है ना, इसको आप बाउंड्री लाइन समझ लेना, ताकि यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, यहाँ मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ. So sales equals to sales minus sales return, and cost of goods sold equals to opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock. अब यहाँ पे आपके मन में पॉइंट आएगा, what is opening stock? Any stock which are held by the business at the beginning of the year. Closing stock means the value of the stock which are held by the business at the end of the accounting year. Net purchase means purchase minus purchase return. And direct expense means any expenses which are incurred by the business directly, which are related to the manufacturing of the product. So उसके भी कुछ examples हैं, direct expenses के भी कुछ examples हैं, तो उनको भी आप लिख लो कि direct expenses के क्या क्या examples हैं. So there are a few examples of the direct expense, like a freight, carriage. If we are talking about the carriage inward, so it will be a direct expense. If we are talking about the carriage outward, it will not be taken as the direct expense. Carriage inward is a direct expense. Carriage is a direct expense, but carriage outward is an indirect expense because it is related to the sale of the production, not a purchase of the purchase of the goods. So freight, carriage, and very kind of the wages. When we paid the wages to the laborers, it is also included in the direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, लाइक पावर एंड फ्यूल. पावर एंड फ्यूल, it is also categorized under the direct expense. And any kind of the factory expenses, जो factory expenses होते हैं, it will be also included in the, suppose factory rent, factory lighting, so all the expenses will be included in the direct expense. So मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे यू विल फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. सो यू कैन सी दैट मैंने आपको बेसिकली बताया कि ये अकाउंट किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, दैट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट? दैट इज द सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट cost of goods sold? Cost of goods sold equals to opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock. अब इसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस में कई तरह के एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, लाइक अ फ्रेट, कैरेज, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड रॉयल्टी. ओके, बिकॉज all these expenses are related to the production process of the any goods. So how we will prepare the how we will calculate a gross profit and gross loss? Because ultimately the objective of trading account is to calculate the gross profit or gross loss. Basically trading account का जो फाइनली पर्पस होता है वो यही होता है कि हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करें. तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यूएशन करना आना चाहिए. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, सो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये अपनी कॉपी में आप बहुत अच्छे से लिख लो कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर हमारी सेल्स ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, सो दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट.
And suppose in any question your cost is higher than the sales, your cost of goods sold is higher than the sales, so it reflects the negative balance, and this will be known as a gross loss. So gross profit कैसे आएगा? Sales minus cost of goods sold, and loss कैसे आएगा? Cost of goods sold minus net sales. और कब आएगा लॉस? जब हमारा कॉस्ट ज्यादा हो और सेल्स की वैल्यू कम हो. So these are the important formulas by which you can easily calculate the amount of gross profit or gross loss. In summary, I want to say that कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बेसिकली दो एलिमेंट पता होने चाहिए, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स कैसे निकलेगा? यू कैन सी दैट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? यू कैन सी दैट. डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से आइटम्स आएंगे? यू कैन सी दैट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ये भी आपको दिख रहा होगा आराम से. ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड कि हाउ वी विल कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज. बट हाउ वी विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट? आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे? बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. द फॉर्मेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज एज फॉलोज. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द नेम, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट को आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो. जनरली इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर. If we follow the calendar year, so it will be prepared on 31st December, and if we follow the financial year, so it will be prepared on 31st March. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. The format of the trading account are as follows. First of all, we write down the particulars, rupees. So basically इसमें 4 कॉलम्स होंगे, जिसमें 2 कॉलम पर्टिकुलर्स के होंगे और 2 कॉलम अमाउंट्स के होंगे. और जो ये बीच में आपको बॉर्डर दिख रहा है फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का पर्टिकुलर्स रुपीस, इट विल बी नोन एज द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट विल बी नोन एज द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट. एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड. सो उसमें जितने भी एक्सपेंस होंगे इट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और जितने भी इनकम्स होंगे उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक. ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. टू परचेज, and if any kind of return regarding the purchase, that is a purchase return, so it will be deducted from the purchase, and we write down the amount column as a net purchase. Purchase में से net purchase ही हमें लिखना है. तो purchase में से हमें क्या माइनस कर देना है? Purchase return. And purchase return को हम purchase return भी बोलते हैं, you know very well, as well as the return outward भी बोलते हैं. As well as we write down the all the direct expense on the debit side of the trading account. Direct expense means, you know very well, freight, carriage, wages, power and fuel, factory expense and royalty. तो आप इन सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में शो करोगे. सर क्रेडिट में क्या शो करेंगे? पहला तो सेल्स, क्योंकि इट इज एन इनकम, माइनस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न को हम माइनस करेंगे और नेट सेल्स को हम लोग अमाउंट में राइट डाउन करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट कि सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद नेट सेल्स को हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और एक और आइटम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं बिकॉज इज एन एक्सपेंस, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अ अमाउंट ऑफ द स्टॉक व्हिच आर हेल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. जो भी हमारे पास स्टिल बचा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक, जो भी बिका नहीं है, सो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द इनकम. ओके, सो यू कैन सी दैट हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दी. अब हम इसको टोटल करेंगे, यानी इनकम्स को ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे. और अगर हमारा एक्सपेंसेस साइड कम पड़ता है, इट मींस आवर इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस, सो इट विल बी ट्रीटेड एज द ग्रॉस प्रॉफिट. यानी अगर डेबिट में कोई बैलेंस आता है, सो इट विल बी टेकन एज द ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर हमारा क्रेडिट में कोई बैलेंस आता है, सो इट विल बी नोन एज द ग्रॉस लॉस. बैलेंस करने का मतलब यू कैन सी दैट लेजर में आपने पढ़ा, बैलेंस करते हैं ना, दोनों साइड इक्वल करते हैं. अगर 10,000 है तो उधर भी 10,000 आना चाहिए. मान लो टोटल करके 8,000 आ रहा है तो 2,000 विल बी टेकन एज अ ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर क्रेडिट में कोई बैलेंस आता है, सपोज डेबिट में टोटल करके 8,000 आ रहा है, ठीक है, और क्रेडिट में 8,000 आ रहा है, 2,000 विल बी टेकन एज अ ग्रॉस लॉस. मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि एक ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता. यू कैन सी दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा उसे ग्रॉस प्रॉफिट होगा, या तो उसे ग्रॉस लॉस होगा.
Okay, so you can see that how we will prepare the trading account. Any doubt? I hope it is clear for you. Let's we take the few question related to the trading account. कुछ questions ले लेते हैं, उसको solve करते हैं, and we will find out the gross profit or gross loss with the help of the account as well as with the help of the formulas. Okay. So the question which are related to the calculation of the gross profit. So the question is prepare trading account and find out gross profit और ग्रॉस लॉस. यानी या तो आपको इंफॉर्मेशन से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा. ओके, so how we will calculate the gross profit and gross loss? You can see that the formula and how we will prepare the trading account. यानी आपके पास दो वे हैं, या तो आप फॉर्मूला से ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकाल सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकाल सकते हैं. दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे निकालना चाहते हैं. बट इस क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों चीजें पूछ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट भी बताओ और ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस भी बताओ. तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में मैं दोनों तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा. एंड द इंफॉर्मेशन आर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 5000, सेल्स 2,50,000, carriage inward 2 lakh, carriage inward is 1000, purchase 2,50,000, परचेज भी क्या 2,50,000, सेल्स भी क्या, फ्रेट इनवर्ड 1,500. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सो प्लीज नोट डाउन इन यू कॉपी इन फुल फॉर्म. फ्रेट कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट इनवर्ड. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 3,000. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज क्लियरिंग चार्जेस. क्लियरिंग चार्जेस मतलब जैसे आपने चेक दिया बैंक में तो उसको क्लियर करने का भी बैंक को चार्ज लेता है, दैट इज 8,000. और मैं बता दूं इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो क्लियरिंग चार्जेस, purchase return carriage outward. Purchase return is 1,000 and carriage outward is 2,000. Carriage outward जो है it is also treated as indirect expense. मैंने आपको clearly बताया था. As well as the information related to the closing stock is 10,000. So closing stock is 10,000. So मैंने आपको सारी information दे दी. अब आपको क्या करना है? First of all you have to calculate the ग्रॉस प्रॉफिट. एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो यू कैन सी दैट नेट सेल्स इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, दैट इज 2,50,000, and what is the amount of sales return, that is 3,000. So net sale will be 2,47,000. If we are talking about the cost of goods sold, so cost of goods sold का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग. So what is the amount of opening stock? That is 5,000. Next will be a net purchase. Net purchase means purchase minus purchase return, and purchase return will be a 1,000. 2,50,000 minus 1,000. So net purchase will be a 2,49,000. ये आपको ध्यान रखना है. डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं? यानी यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्टली आप डायरेक्ट एक्सपेंस में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा. सो डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हैं? एक कैरेज इनवर्ड दैट इज 1,000, और दूसरा है आपका फ्रेट इनवर्ड दैट इज 1,500. क्लियरिंग चार्जेस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस. कैरेज आउटवर्ड इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस. क्लोजिंग as well as no, only two types of the direct expense are there. So direct expense will be a 2,500. So opening stock plus purchase, that is a net purchase, plus direct expense, that is a 2,500, minus closing stock. What is the amount of closing stock? That is a 10,000. So cost of goods sold will be a, इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा आपका? कैलकुलेट कर लो. 2,49,500, that is 254. 254 minus plus 2,500,
254 plus 10,000. 254 plus 10, 264 minus 2,500. So your cost of goods sold will be a, sorry for that, 2,49,000 plus 5, 254 minus 10, 244 plus 2, 246,500 is your 2,46,500 your cost of goods sold. And now how we will calculate the gross profit? The formula of gross profit is sales minus cost of goods sold. What is the amount of sales? 2,47,000. And what is the amount of gross profit? The amount of gross profit will be a, cost of goods sold will be a 2,46,500. So your profit will be a, gross profit will be a 500 rupees. This is your answer. So you have to calculate a gross profit with the formula. तो आपने formula से gross profit निकाला. Now your next task is you have to prepare the trading account. आपको trading account बनाना है. देखना trading account भी बनाएंगे ना तो 500 ही gross profit आएगा अगर मैंने कोई calculation mistake ना की हो. So first of all we draw the format, that is the trading account, and one by one we represent all the values in the trading account. So what are the values? First of all we write down to opening stock. What is the amount of opening stock? That is a 5,000. Second is the sales. You know very well sales. That is 2,50,000 minus sales return. You know very well sales में से sales return को क्या किया जाता है? Minus किया जाता है. That is a 3,000. So this is 2,47,000. It is your sales. Next one is a carriage inward. And before that carriage inward से पहले में क्या लिखना होता है? Purchase. Purchase will be a 2,50,000 minus purchase return will be a 1,000. So your net purchase will be a 2,49,000. Next is a direct expense. Direct expense में कौन कौन से expense हैं? एक है carriage inward 1,000. Second is a freight inward, is also known as a direct expense. Clearing charges not a direct expense. Carriage outward is not a direct expense. And last, you will write down the closing stock on the credit side of the trading account, that is a 10,000. So your credits value is 2,57,000. Now इधर भी कितना आना चाहिए? 2,57,000 आना चाहिए. So please add it. 249 plus 5, 254, 255, 256,500. So you can see that 500 is the balance. It will be known as a gross profit. It will be shown as the gross profit. You know very well कि अगर डेबिट साइड कम आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड कम आता है तो इट विल बी नोन एज द ग्रॉस लॉस बिकॉज योर इनकम साइड इज ग्रेटर देन द एक्सपेंस साइड. So I hope it is clear for you how we will calculate the gross profit from the given question, from the given information by two way. आप ग्रॉस प्रॉफिट दो तरीके से निकाल सकते हैं. Either you will calculate the gross profit with the help of formulas, as well as you will have to prepare the you will calculate the gross profit with the help of trading account. Okay, so I hope it is clear for you. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ at the end of today's video. So how we will calculate the gross profit or gross loss? Gross profit and gross loss equals to sales minus cost of goods sold. If sales is greater than cost, so it is a cost of gross profit, and if cost of goods sold is greater than the sales, so it will be known as the gross loss. Is that clear? Number second, how we will calculate that sales? Sales equals to sales minus sales return. Sales return is also known as the return inward. And how we will calculate the cost of goods sold? Opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock. Direct expense means all the expenses which are related to the production process. Factory expenses, factory lighting, factory rent, wages, carriage inward, freight, carriage. It will be known as a direct expense.
If we are talking about the further information, what is a net purchase? Net purchase means purchase minus purchase return. And this is the format of the trading account. Format of the trading account is, first of all we write down the name on the top of the trading account, that is a trading account for the year ended. यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी डेट की, दैट्स वाई हमने नहीं लिखा कि किस डेट को हम बना रहे हैं. उसके बाद हम 4 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, particulars rupees. The left hand side will be known as the debit side and right hand side will be known as the credit side. Debit side में opening stock, purchase minus purchase return, direct expense, closing में credit side में sales minus sales return, and after that we write down the closing stock, and thereafter we take the balance. हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है. सो वी कैन सी दैट 2,47,000 plus 10,000, that is 2,57,000, the total of the credit side of the trading account. जब डेबिट में टोटल क्या, सो we'll find that 249 plus 5 254, 255, 256, 500, बट कि टोटल कितना आ रहा है 257. So you can see that this organization enjoy the 500 rupees of the gross profit. So in this video you can see that which types of the financial statement included in the final account of the sole proprietorship, and in this video we also see that how any organization prepare its trading account and how it will be calculate its gross profit by the formula or with the help of the account. And this is the formula of the gross profit and this is the account of the format of the trading account. So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.